Hello, everybody. Good evening. Can you hear me? Can you see me? Good evening. क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? Please type a yes. All right. All right. So we can start a little early today. आज हम थोड़ा जल्दी शुरू कर लेंगे क्योंकि फिर हम ओवर टाइम नहीं जाए जिस वजह से जिन्होंने अपने हाथ उठाए हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स सो वी कैन टेक देम. इफ यू हैव एनी अगर आपको कुछ सवाल है तो प्लीज उसको आप चैट पे लिख दीजिए. हम लोग उसका आंसर आपको दे देंगे. अदरवाइज वी लोअर योर हैंड्स. And how are you all doing? कैसे हैं आप? Great. Are you feeling good? How was the session for you yesterday? We'll also add Akanksha on Spotlight. Give me 1 second. Good evening, everybody. I hope you all are very well. कैसे हैं सब? Thumbs up दिखा सकते हैं अगर बढ़िया है तो. Yes, all well. Very, very good. Yeah, continue, Yamini. You were saying something. Yeah, I was saying if you have any questions, you can ask them. Akanksha is here. We can take them up for like 2-3 minutes. Or do you want to start and then take the questions later? Yeah, we can take the questions. आप लोगों को अगर कल जो भी हमने सीखा और करा उसमें से कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. If you have any questions from whatever we covered yesterday in terms of the curriculum or your journaling experience, right now is a good time to ask. So there's a question on YouTube asking for a recap of yesterday. So if you want to just sum up what we did yesterday in 2 minutes. Okay, that's a tricky one. Okay, the summary of yesterday is when we journal, we must feel free and we should allow ourselves to completely open up and let go because many times in our life we have circumstances that we go through or experiences that we go through which we don't get to express. And when we keep those things inside of us, they bottle up, they create stress inside our system. And research tells us that when we write down our thoughts and feelings, the more inner thoughts and feelings, it gives us a sense of relief. It helps us comprehend these experiences better. And also it helps you kind of move on, in life using your mind in a skillful way. So it's kind of a tool. It's journaling is basically a tool like yoga or meditation or mindfulness, which basically allows you to handle your mind better. That's the little summary. But you can come back in a month or two when we, do the workshop again and attend day one to actually experience what we covered yesterday. Yeah. So there's another question. Can we write about a person in brain dump? Of course, you can write whatever you want in brain dump. You can write about your experience. You can write about something that's concerning you, any intrinsic thoughts or feelings. You can write about, if you're thinking about a person, you can write about that. If you're thinking about a situation, something you want to do in future, you can write about that. Or something that's bothering from the past, anything you can write about. The next question is, how is expressive writing different from brain dump? It's not actually. Expressive writing is a deeper version of brain dump. Brain dump is something you can do anytime, anywhere. Like I do brain dump when I'm going in a metro. I have some thoughts. I want to just quickly take it out of my system so that, where I'm going next, I'm more present. Because if we have thoughts in our mind which are taking us again and again to future or past, then that does not allow us to be completely in the present moment in what we're doing. And that basically makes us enjoy life a little less, which I don't like to do. So brain dump is basically a tool to just dump your thoughts and empty your mind so that more and more you can be in the present moment. Expressive writing also, format is similar where you express your deepest thoughts and feelings. But in expressive writing, you say, okay, this is particularly something that's bothering me. So I'm going to take out good 20-25 minutes and just really confront myself with what's going on inside of me and really write those thoughts and feelings on paper. That's the idea. Right. And also, I would like to add that in expressive writing, the format is to do it for 4 days consecutively.
So whoever wants to attempt this, maybe next week or later, if you particularly some particular issue you're going through, which you would want to, take a deep dive into and really figure out, okay, what is it, why I'm not able to, get over this, then you can use expressive writing. 4 days, 20 minutes each, write about either the same thing or something else. Sometimes, so many things are very connected. So when you start writing down, things open up, and, you don't even realize there were certain layers that existed inside of you that are kind of opening up. So yeah, expressive writing is a rather deep dive. Brain dump you can do on your phone, you can do in your journal. It's like a quick 10-minute thing that you can do anytime you want. One gentleman said that the two of us look like sisters or cousins, so technically we are not. Yeah, and we also need to talk in Hindi. We'll have to mix it up a little bit. Yeah. Yeah. हाँ, कोई हिंदी में सवाल होगा तो मैं बिल्कुल उसका हिंदी में दूंगी जवाब. अभी मैं ऐसा मान रही हूँ कि जो इंग्लिश में पूछ रहे हैं सवाल, वो उनको इंग्लिश में ही चाहिए आंसर. आप अपना सवाल हिंदी में पूछ सकते हैं. करिकुलम हम दोनों इंग्लिश हिंदी में करेंगे. And yeah, people have started writing their scores, so I think it's a good time to take over. And okay, we all attempted the mindfulness quiz. कल हमने quiz share किया था ना, यामिनी ने link. Yes, we did. Yeah. हाँ. So you want to type your scores? आप लोगों ने कल mindfulness quiz लिया था, तो आप लोगों के क्या scores आए, आप chat में बताइए. अलग अलग आया है. So what is mindfulness? Being mindful means having the ability to be in the present. That is all. This whole thing that goes around on the internet in the world these days, बहुत हल्ला मचा पड़ा है रे, mindfulness ये वो, it's coming from the West. ध्यान से, when we were young, जब हम छोटे थे, हमें बोलते थे ना स्कूल में, ध्यान से काम करो, ध्यान से चलना सड़क पर, ध्यान से, वही है mindfulness. ध्यान से मतलब वर्तमान क्षण में मन को रख के कुछ करना. Being mindful just means just being attentive to the present moment and, doing it with a consciousness. Okay, this is what it is, instead of doing mindlessly. आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, आप कुछ मान लीजिए पानी की बोतल या कुछ लेने गए हैं एकदम रेफ्रिजरेटर तक, और फ्रिज के सामने खोल के खड़े हो गए हैं, सोच रहे हैं अरे क्या करने आए थे. कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा? How many times has it happened with you that you go to the refrigerator or kitchen thinking, oh, I'm going to do this, but the moment you reach there in front of the refrigerator, you open and you're standing there thinking, oh, why did I come here? Yeah, so many of you are saying, yes, this has happened with me. This is mindlessness. Mindfulness is the opposite of mindlessness, right? When you're really aware, okay, this is what I'm doing right now, so my attention is here. Mindfulness quiz is a score which kind of helps you, it kind of tells you how mindful you are. So if your mindful score is really high, like 90 and 95, congratulations, very good, which means you're pretty mindful. This obviously means that you have certain practices in your life, maybe like yoga, meditation, maybe you already journal, you exercise a lot. Basically, you're doing things actively, which is helping you bring your mind to the present moment and helping you be mindful. And people whose score is a little less, this is your cue to take this opportunity to do what? To increase things in your life which will help you be more mindful. Journaling helps you be more mindful. Meditation, yoga, obviously you're part of this community, so you know the how much yoga helps you be more and more mindful, get in tune with your body and mind and breath, right? तो ये अच्छा अवेयरनेस है. अगर आपका स्कोर थोड़ा कम है, इसका मतलब माइंडफुलनेस थोड़ी कम है, तो आप और इन्वेस्ट करें अपने आप में, ध्यान करें, सीखें. सुदर्शन क्रिया एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, आप जो सीख सकते हैं. आई एम श्योर सौरभ ने बताया होगा आपको. आप योगा अपनी क्लास में आइए रोज. आप जर्नलिंग सीख रहे हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं. तो स्कोर अगर कम है तो आप ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा आप माइंडफुल बने. माइंडफुल बनने का मतलब है वर्तमान में मन रहना स्टार्ट हो, है ना. और अगर स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा है तो आप, इसका मतलब ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका मन वर्तमान क्षण में ही रहता है ज्यादातर, तो आप कंटिन्यू रखिए वो प्रैक्टिसेस. करेक्ट? ओके, ठीक है. सो दैट्स ऑल. नाउ लेट्स क्विकली गेट इनटू डे 2.
If you still have any questions, I will take them towards the end of the class. Today, we're only going to do one long exercise, journaling exercise in class. So what we can do is we can keep last 5 minutes of the class for your questions if you want. I'll take it then. ठीक है, अभी के लिए हम start करते हैं. तो कल हमने सीखा था, yesterday we learned how we can use journaling to release stress and free ourselves from, stressful, strenuous thoughts and feelings. हमने कल सीखा था किस तरह से हम journaling को use करके बहुत जो नकारात्मक भावनाएं हम में उठती हैं या बहुत तनाव जो एकत्रित हो जाता है मन में, उसको किस तरह से हम जर्नलिंग के थ्रू निकाल सके. और बहुत लोगों ने कल अनुभव किया, आपने हल्का महसूस किया लिखकर. यू फेल्ट lot more lighter, you felt a sense of relief, relaxed. So that's part one of it, right? Second part of it is, so many of you said कि अरे हमने ये लिखा तो सही, but मेरी problem का solution नहीं मिला है. Like I wrote about this, मुझे थोड़ा light लग रहा है, but still the problem exists, right? Many of you said that I've written down what my problem is, but despite that, there's still something I don't know how to solve this, even if I'm feeling lighter. So today we're going to do, how we can use journaling to solve these problems that we face in our life, okay? Before I get into that, have you noticed how when you have to go to a party or, you are meeting someone, or even like I'm coming to this Zoom meeting, what is our typical behavior? What would we do? We'll go to a mirror and we'll just look at how we're looking. We will make sure that, our hair is looking fine. We're well dressed. We look presentable. Type yes in the chat box if you think obviously you will do that. You will make sure that you're looking good on the outside, presentable. Do you agree with me? Yes, no? Of course, right? Latika, I'll take your questions towards the end, huh? Hold on. Hang on to it. Now, all of you are saying, मैंने सवाल ये पूछा कि आपको किसी पार्टी में जाना है और कुछ करना है, तो आपकी ऐसा टेंडेंसी होगा ना कि आप अपना बाहर से अच्छे दिख रहे हैं, एकदम बढ़िया प्रेजेंटेबल हैं, बाल वाल हैं, कुछ मेकअप करने का मन है तो वो भी कर लिया है, ऑल दैट इज सेट एंड डन. पर सवाल ये है कि आपको ये पता है कि बाहर से आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो आप अपने आप को शीशे में देख के फिक्स कर लेते हैं. When you're not looking okay on the outside, you go to a mirror, you look at yourself and you try to fix yourself, right? But you can look into a mirror and you can see that you're not looking okay on the outside. But what about your inside? Do you have a mirror to see for yourself whether you're okay on the inside? आप बाहर तो देख सकते हैं एक शीशे में, एक आईने में कि हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं, हम ठीक है या नहीं बाहर से, पर आपके पास कोई आईना है जो आपको दिखाता है कि आप अंदर से कैसे हैं? यस और नो? यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स. हाँ या ना आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं. नो, राइट? या तो जर्नल एक ऐसा स्पेस है आपको जो ये मिरर देता है. Your journal is a space which gives you this mirror to look on the inside. Otherwise, where else will you see? आप कहाँ देखोगे नहीं तो, right? So journaling इसलिए एक बहुत powerful tool है when it comes to reflection and awareness building, because so much goes on into your mind. बहुत कुछ आपके मन में जो चलता रहता है. Your journaling gives you the opportunity to first of all write all of that down. Now, once you've written it down, suddenly these 6, 10, 20, 30, 60,000 thoughts that randomly keep crossing your mind, and you start making these castles and stories and clouds, suddenly they are tangible words on paper. Now that makes it very accessible, number one. Number two, you are now at a distance from this experience because it's gone on paper. This helps your working memory and your intellect to work. Research shows when you have narrated whatever is going on here, it improves your ability to think through things. This is why journaling helps you then to see, okay, this is my situation now, what do I do about it? Do I need to take a decision? Do I need to take an action? Is there something I can do about it? This thinking ability cannot come when you are high on emotion.
Because when you're high on emotion, you're so overtaken by the emotion itself, it doesn't let you think clearly. Have you experienced this or not? You're so angry, or you're so disappointed, or you're feeling so hurt. You're not able to think clearly. You'll say or do things you'll 100% regret later. And I'm sure it's our experience, all of us, right? So journaling helps you calm down these emotions, number one. Number two, distance yourself with what's happening, and then think through these solutions. Because why? Because your thinking capability improves when you're not burdening yourself with thoughts and feelings which are unsaid and unheard, right? Also, we have a very strong intrinsic tendency to want for things to make sense in our life. I'll give you an example. If somebody is not well in your house, okay, I'll repeat all this in Hindi. मैं एक बार हिंदी में भी ये वापस बोल दूंगी सारा. When somebody is not well in your house, now you're concerned, oh, my this, like, let's say my mother is not well. So what will you do? You're eating your food, you're thinking, oh, my mother is not well, has she had her medicine? Has she, had her food? Then you're going to work, you're working on your laptop. At the background of your, in your head is going on, oh, I have to consult this doctor. Maybe I should speak to Masi, something. Yeah, let me speak to this other relative. Maybe they can give me some better advice. On and on and on. You'll eat, drink, sleep, think about that thing that you're concerned about. Not only that, in your dreams also sometimes you will experience this, right? How many of us, we dream also about the same concerns? Why? Because we have a very strong intrinsic tendency for things to make sense for us, for things to come to completion. When things are incomplete, when things are not making sense, then it bothers us, and then we overthink again and again. Then we get into that loop of brooding and getting into that spiral. That's why journaling helps you, so that you can break this pattern of getting stuck into overthinking and again repetitively thinking about that's not making sense, and bring things to some sense and some conclusion and some completion, so that you can be at peace. This is why journaling for reflection and awareness building is very important. So when you're stuck in a situation where you can't take a decision, when you're stuck in a situation where you have a problem and you don't know what to do about it, journal is the way to go. Now, अभी मैं वापस सब हिंदी में बोलती हूँ. हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, है ना? और हम उसमें फंस जाते हैं. तो कोई, मान लीजिए आपकी कोई बीमार है आपके घर पे, आपको उस चीज की चिंता लगी रहेगी, राइट? अरे उन्होंने दवाई खाई नहीं खाई, उन्होंने मेडिसिन ली, खाना खाया. आप खाते, सोते, जागते, नींद में, सपनों में भी आपको वही कंसर्न वापस आता है. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत ही इंट्रिंसिक को हिंदी में बोलेंगे, बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए, बहुत ही इनेट हमारा नीड है कि जो भी चीजें है ना, उसका कोई सेंस बने. जब चीजों का सेंस नहीं बनता है, मतलब हम उसको जोड़ नहीं पाते हैं, अच्छा इसका मतलब ये है, ये ऐसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, हम जब उसका मतलब कुछ नहीं निकाल पाते हैं, तो हम उसको ओवरथिंक करते हैं, हम उसके बारे में टेंशन लेते हैं, और वो तनाव पैदा करता है. ठीक है, एक तो बात ये है. दूसरी बात ये है कि देखिए, आपको 6, 7, 10, 20,000 थॉट्स आ रहे हैं पूरे दिन में. अब इनका आप क्या करोगे? तो जब आप जर्नल करते हो ये सब कंसर्न्स के बारे में, आपको मौका मिलता है इन बहुत सारे थॉट्स और फीलिंग्स को पेपर पे लिख देने का. तो पेपर पे लिख के क्या होता है कि सडनली जो इतनी डॉन्टिंग लग रही थी माइंड में चीजें, पेपर पे वो वर्ड्स बन जाते हैं. आप अपने आप को थोड़ा सा उससे डिस्टेंस कर पाते हो. आपको लगता है अरे मैं हैंडल कर सकती हूँ. आप लोगों के साथ बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस यस्टरडे? आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आपको लगा अरे जब ये मेरे मन में थी बात, तो मुझे बहुत ही डरावनी या बड़ी लग रही थी. when it was just in my mind, it seemed like a very big deal, but when you wrote it down on paper, पर जब आपने उसको लिख लिया अपनी जर्नल में, तो आपको लगा इतनी भी बड़ी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी. कितने लोगों को ऐसा लगा था कल लिखकर? How many of you felt like that yesterday? Our chat is off. Can you all type? इतने देर से that is why people were unable to type on Zoom. Can you type now? आप लोग okay, yes, now we can see. Yeah, everybody, I can see their responses. Okay, great. So yeah, you're saying, all of you saying yes, right? So that is why, इसलिए हमें क्या करना है, जब भी हम ऐसा महसूस करें कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई डिसीजन नहीं,
ले पा रहे हैं, फंसा हुआ फील करें, फंसा हुआ फील लाइफ में नहीं होते हैं फंसे हुए हम कभी भी. वी आर नेवर स्टक इन लाइफ, वी आर ऑलवेज स्टक इन द माइंड. हम हमेशा मन के स्तर पर फंसे होते हैं. तो उससे हम निकल सकते हैं कैसे? बाय वर्किंग थ्रू आवर थॉट्स. जब हम मन के स्तर पे फंसे हुए, हम उसको ही अपनी सोच को थोड़ा ठीक करके समझ के अपने विचारों को हम रास्ता बना सकते हैं. तो आप कितना बड़ा ये एम्पावरिंग चीज है ना, दिस इज सच एन एम्पावरिंग टूल टू रियलाइज we are never stuck. You can just unstuck whenever you want. Just pick up your journal and do it. Okay. Now, before I get into the problem solving exercise, how many of us have felt that, oh, I'm facing this huge problem in my life, or this problem keeps occurring in my life? Can someone just come and solve this problem for me? Type I in chat if you have experienced this. आप में से कितने लोगों को ऐसा लगा, अरे मेरे जीवन में ये जो परेशानी है ना, मैं तो तंग आ गई हूँ या आ गया हूँ इससे, कोई तो आकर ये मेरी परेशानी को ठीक कर दे बस. आए लिख सकते हैं अगर आपको लगता है हाँ मैं हूं ऐसा इंसान, है ना. सबको ऐसा लगता है. तो अब मुझे बताइए, नाउ इफ यू थिंक यू आर दैट पर्सन, प्लीज कैन यू टेल मी हु इज गोइंग टू कम एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू? कोई आने वाला है क्या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने? कोई नहीं आने वाला है, ठीक है. Of course, you'll get guidance and love and blessings and grace also sometimes. But actually, action तो हमें ही लेना है ना. We are the one who has to take the action. People can guide us, suggest, and of course, they can be there to support us. So when you remember that I only have to take charge, it is empowering. Otherwise, you'll feel, oh, I'm weak, this, that. So with this attitude, we'll get into this journaling exercise today that you can solve your own problems. हम इसी भाव के साथ आज जर्नलिंग एक्सरसाइज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कि आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. बस थोड़ा सा मन को शांत करके मौका देने की जरूरत है उस आंसर को आने के लिए. और ये डूएबल है. आपसे पहले मेरे बहुत हजार स्टूडेंट्स ने किया है और आप भी ये कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. क्यों मैं बताऊं क्यों? आपकी लाइफ के बारे में आपसे ज्यादा कोई ज्यादा नहीं जानता है. आप इस बात से एग्री करते हैं? यू नो व्हाई यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम? बिकॉज नोबडी in this world knows your life better than you. So you have all the data points. You just have to, put your mind at calm and just use the information that's available to you and logically think about it. Okay. Okay. So let me share my screen. So what is this exercise? आप ध्यान से सुनिए और उसके बाद करेंगे. थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है ये, एक ही बार हम स्टार्ट करेंगे. I'll give you a good 20-25 minutes to do it. First, ये problem, so I'll take it in English first and then Hindi. In this exercise, it's a 3-part exercise. For the next 2 minutes, please listen to me. Don't start writing so that you understand what's to be done. For the first 7 to 8 minutes, you're going to write about your problem freely without any inhibition for, whatever, 7 to 8 minutes. आप सबसे पहले स्टेप में, ये 3 स्टेप है इस एक्सरसाइज में. पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है, कोई एक प्रॉब्लम लीजिएगा. हाँ, ओनली टेक 1 प्रॉब्लम फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज फॉर नाउ. वंस यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट, you can do it for any problem you want later. So what you'll do is, you'll just freely write about your problem. Oh, I'm facing this is the thing, this is what is making me feel. आपकी जो feelings हैं, आपके thoughts या feelings हैं, मुझे इस चीज की वजह से गुस्सा आता है, या मुझे इसकी चीज की वजह से बुरा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, I'm not understanding what to do, it's making me feel a certain emotion, this person is not helping me. आपकी जो भी complaints हैं, feelings हैं, thoughts हैं, whatever your complaints, thoughts, feelings, concerns, in step 1 just flush it all out. So this is like a brain dump in a way. So you will do that as step 1. Step 2, you will read what you have written. आप step 2 में क्या करेंगे, ये आपने जो पहला किया वो एक brain dump की तरह है roughly. Step 2 में आप क्या करेंगे, आपने जो लिखा है आप उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे. You will read what you have written. Then you will try to identify in this, whatever I have written, I have expressed, what are the actual challenges, or barriers that are actually creating the problem, right? Which is not letting me overcome this challenge that I'm facing, right? Second step में आप क्या करेंगे, जब आप पढ़ लेंगे आपने क्या लिखा है,
उसको आप देख के आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी कहानी में एक्चुअल चैलेंज क्या है, क्या रुकावट आ रही है इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने में मुझे, और फिर आप 7 से 8 मिनट उसके बारे में लिखेंगे कि क्या चैलेंज है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द बैरियर. You will exactly write about the impediment, the challenge, or the barrier that's stopping you to move forward or overcome this problem for about 7 minutes. Second step जब आपने लिख लिया है, फिर उसके बाद you can again take a minute's break और 30 seconds का break ले सकते हैं आप. Then you will read the step 1 and step 2 what you've written, put your mind together, synthesize your thoughts, and then see, okay, this is the thoughts and feelings I have, this is the challenge I'm facing. Now, what is the next step? What is the potential solution to my problem that I can take? You'll probably be able to come up with the complete solution, or if not the complete solution, don't have to worry about that. What is the next thing I can do towards solving this problem for myself? Action. What action can I take? Next one, solid action. थर्ड स्टेप में आप पहले और दूसरे में आपने लिखा क्या है वो पढ़ेंगे, और आप अपना थॉट्स और अपने थोड़ा उसको एनालाइज करके सोचेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसकी ये बैरियर आ रहा है कि मैं इस दिक्कत को इस वजह से ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ. अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्या मैं करूं कि मैं आगे बढ़ पाऊं इस सिचुएशन से. हो सकता है आप पूरे सोल्यूशन में पहुंच पाए, या नेक्स्ट स्टेप क्या आप ले सकते हैं वो इस सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम, इस एक्सरसाइज से आप निकाल पाएंगे. किसी को कोई सवाल है? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? No, Anushka. In this exercise, only one problem you tackle. Later on, you can use this exercise for another problem. Now, a quick example of this I'll give you. When COVID happened and we were in pandemic, जब COVID हुआ था, एक मैं छोटा सा example दे रही हूँ. So in our house, for a few times, I'm giving you an example, Karishma. For a few days or weeks, we were fighting a lot. We were, like constantly somebody was yelling at someone, some quarrel was happening. And I was not able to understand why there is so much disturbance in the house, and somebody's crying, somebody's getting pissed off. So my problem was that, oh my God, घर पे बहुत शोर मच रहा है, सब लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे पे कुछ ना कुछ होता रहता है, हर दिन में 1-2 बार कुछ खिटपिट चलती जा रही है. So then I decided to use this exercise. तो मैंने कहा okay, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली एक्सरसाइज करती हूँ, एंड उससे एक शायद सोल्यूशन निकलेगा. तो पहले 7 मिनट मैंने लिखा मुझे फील क्या हो रहा है, क्या थॉट्स हैं, अरे मम्मा ने ये कहा था, पापा ने ये बोल दिया, भाई से ये लड़ाई हो गई, वगैरह वगैरह. Then I just wrote about whatever I was going through, whatever khitpit was happening, some quarrel here and there, whatever. Then I said, okay, why exactly is this happening? What is the challenge? So when I had written it down, I realized all the fights or all these quarrels or something was happening because of the chores in the house. Who will do what? Who will do jhadu? Who will do pocha? Who will do the cleaning? Because otherwise, before pandemic, we had help for everything. Somebody's coming cooking, somebody's coming cleaning. But when the pandemic happened and we were in lockdown, suddenly we did not know what to do, because when someone feels like they'll go make breakfast, but next day they're busy with their office work, so they can't. So now everybody is waiting. Or somebody said, okay, tomorrow I'll do jhadu, but suddenly this person got into a meeting. तो क्या हुआ कि जब मैंने पढ़ा फर्स्ट को, मुझे रियलाइज हुआ कि जो सारी डिस्कशंस हो रही थी, हीटेड डिस्कशंस, वो घर के काम के अराउंड हो रही थी. ये प्रॉब्लम का बैरियर, ये इम्पेडिमेंट मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, ये जो शांति नहीं आ पा रही है जो मुझे चाहिए, वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि सब घर के काम के रिलेटेड लड़ रहे हैं. तो जब मैंने ये पूरी राइटिंग की तो मुझे समझ में आया, व्हेन आई रोट ऑल दिस आई अंडरस्टूड, okay, so what we need to do is, the solution is, this work needs to be divided, pre-planned, so that everybody knows what they're doing and there is no expectation mismatch and we'll stop fighting. तो मुझे ये डिसाइड किया मैंने कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो खिटपिट हो रही है, लड़ाई हो रही है, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि काम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम पहले ही प्लानिंग कर लें, कौन क्या काम करेगा मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सो एंड सो, और काम अच्छे से डिवाइड हो जाए तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा. And this completely solved the problem. We made a chart as a family, we sat down and we said, okay, you do this, you do this, you do this. And for the next almost kitna hum 1.5 साल 2 साल rahe lockdown mein before the help could come in. It just really, I could overcome this problem through this approach. Is this making sense? समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है?
हाँ ठीक है. So okay, now we can start writing. I think आ गया है सबको समझ. फिर भी कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं. मैं यही हूँ, मैं रिप्लाई कर दूंगी. So good, take good 20-22 minutes. Is 8:57. I'll see you back at 9:20. तो आप good अपना 22-23 minutes लीजिए. 7-8 मिनट हर सेक्शन में स्पेंड करो और 20-22 मिनट लेकर अच्छे से एक्सरसाइज करो. Take your good time to do this exercise because it takes time. Go in the exercise with the confidence that you can come up with a solution. You think and say that, just 1 second, Yamini. If you think that, oh, how will the solution come? Then how will the solution come? Have this confidence that this exercise will help you come up with something. Only then it'll come. Okay? Yeah? Okay. Chalo, let's get started.
Glad to read your responses. So many of you on YouTube and on Zoom. You're saying how some of you could find the solution to the problem. Some of you could not find the complete solution, but you see, okay, where this is going and how you're capable of finding the solution. Sometimes somebody is saying, Shikha says, we know the solution. Who is it? It makes me realize that the problem and solutions both exist inside of us. Feeling better. Good, no? So nice. Thank you. Some of you shared such wonderfully. Brain knows both the things. Mona Lisa. Okay, so good. Be with your experience. So 2-3 things can happen. One is that either you found the complete solution. Great, kudos. Second, if you couldn't find the solution, at least you realize that you're capable of thinking through your problems. That's good, right? Like Sudhanshu is saying, it could help me organize my thoughts. So it's probably, you at least had a realization, you learned something about yourself through this exercise. Somebody's coming up with 5 solutions, looks like it. And some people are saying, okay, the solution तो मिल गया, पर implementation कैसे हो? वो तो action देखो आपको लेना पड़ेगा. But उसका एक और solution ये है कि just think of one thing that you can do. One next step I can take to solve this, and then you move on from there. Next step and next step. Some people are saying my problem has to do with some emotion I'm experiencing, right? So what do you do about that? You make yourself more emotionally strong, right? This is just a very haphazard over the surface kind of this thing I'm giving you, just an example. Like, for example, I like a advanced level of this workshop, I make you go through this test in which, there are certain qualities, personality qualities that we have. It's actually available. I don't recall the name right now. But that test is basically available to take. But again, it requires more investment of time. Kuch 30-40 minute ka test hai wo. I took that test years ago, and so it has like standard human qualities, or आपकी कुछ qualities बहुत अच्छी हैं, so they become your super qualities or something. And some of the things, your tendencies are not that great. So for me, I knew I used to face a challenge with this, but that test certified for me that my emotional regulation is super poor. So out of those 24 qualities, mera emotional regulation came on 23. And I was like, shit, that's exactly why I'm a journaling coach, because I need this so much. मुझे इतनी जरूरत है अपने इमोशंस को रेगुलेट करने को, सीखने की. तो कुछ लोगों को जो यहाँ पे लग रहा है ना, अरे हमारी प्रॉब्लम तो हमारे इमोशंस हैं, जर्नलिंग से बेटर कोई सोल्यूशन ही नहीं है भाई. So if you feel that, I'm not able to handle my emotions, or my problem is that I'm not able to deal with my emotions when certain person talks like this. Somebody said, better to not confront only. The problem ka solution is have to go and talk, but I know it'll piss that person off. ये वो माइंड के सारे ब्लॉक्स को रिमूव करना सबसे ज्यादा फ्रीइंग है लाइफ में. बाकी सब कुछ नहीं है जीवन में जो चल रहा है आसपास, यहां से ही फ्री होना है हमें, है ना. तो जर्नलिंग बहुत अच्छा टूल है वो करने के लिए. और उसके लिए आप क्या कर सकते हो? अगर आपका इमोशनल रेगुलेशन फॉर एग्जांपल इज वन ऑफ योर प्रॉब्लम्स, द बेस्ट सोल्यूशन इज टू गेट रेगुलर विद जर्नलिंग. Before sleeping every night, take out 10 minutes and just write down your thoughts and feelings. Sometimes it will take shape of a brain dump. Sometimes, you'll think about some plan that you have to do next week or something. At least you'll take that mental load off your head. And somebody was saying my sleep quality is poor, although I'm sure Yamini suggested a few things. Journaling also improves your sleep quality. Because otherwise what happens, we lie down on the bed and suddenly we're thinking about, oh, this I have to do tomorrow, yesterday this happened, अरे उसने ये बोला था. माइंड एकदम चलने लग जाता है. पर जब ये सब आप लिख के आप बेड में लेते हो तो मन एकदम रिलैक्स होता है, शांत होता है. एंड सो मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी व्हेन दे जर्नल बिफोर स्लीपिंग, इट हैज हेल्प्ड देम इंप्रूव देयर sleep quality. Okay, so Deepshika, I think I already answered your question. How to become emotionally strong? Do yoga, learn Sudarshan Kriya, do journaling, and that's it. Use your breath, use your hand, use your body to do all of it. Okay,
So this is a very powerful exercise. Anytime you're feeling stuck, pick up your pen, write down your thoughts and feelings and understand, अच्छा ये जो मैंने लिखा है इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. क्योंकि बहुत बार ये लिख के ऐसा लगता है हमने बहुत पहाड़ बना रखा है, पर उसमें एक्चुअल कुछ जो इम्पेडिमेंट होता है या एग्जैक्ट बैरियर या दिक्कत है, 2-3 होते हैं, 1-2 होते हैं, राइट? So write about that and say, okay, what is one thing I can do to solve this? Because the solution is not going to come from somewhere else. So literally अगर आपको लगता है मेरे से तो solution आ ही नहीं रहा है. कुछ लोगों ने बहुत ऐसे ही बोला कि you know somebody said that your husband has a drinking problem. Somebody said my child is disabled. Stuff like that. ऐसी situations लोगों ने बताई. अरे हमारी problem तो permanent है. ये circumstance है life का. ये problem नहीं है. Sorry if this hits you hard. Right? आप समझिए मैं क्या बोल रही हूँ. ये एक रियलिटी है. अगर मेरा कोई लाइफ सर्कमस्टांस कुछ है तो ये तो मेरी रियलिटी है, मेरा ट्रूथ है. मेरी प्रॉब्लम क्या है इसमें? मेरी प्रॉब्लम है या तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, या उसकी वजह से मान लो इफ यू नो अगर घर में कोई है, मान लो लाइक फॉर एग्जाम्पल समबडी इज नॉट वेल, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो प्रॉब्लम ये थोड़ी है कि वो इंसान अनवेल है, ये तो रियलिटी है. प्रॉब्लम ये है कि अच्छा मे बी अनवेल है तो मुझे उनका ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं काम में ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, या मैं दोस्तों से मिलने नहीं जा पा रही हूँ. तो मेरा प्रॉब्लम है कि बिकॉज ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम नॉट एबल टू एंगेज इन अदर एंडेवर्स ऑफ माई लाइफ. सो दैट इज वाई जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल एटलीस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, इंस्टेड ऑफ इमेजिनिंग की प्रॉब्लम क्या है, राइट? इंस्टेड ऑफ थिंकिंग की सर्कमस्टांस को आपने प्रॉब्लम बना रखा है, राइट? So when you write, you get one layer deeper. Instead of saying, oh, my problem is my best friend smokes a lot. My problem is my husband is drinking too much. Or my problem is, you know, one person in my family is behaving in a certain way. That is your circumstance. Let's accept it. I know it's easier said than done. But once you say कि अच्छा ये तो situation है, but इसमें actually तभी लिखना ये 3 step important है कि पहले आप अपना लिख लो actual thoughts or feelings. You should give yourself the space to validate what you're feeling or going through. Then you understand, अच्छा मेरे को ये सब फील हो रहा है, या मुझे दुख महसूस हो रहा है, या गुस्सा आ रहा है, या वॉट एवर. बट एक्चुअली इसमें चैलेंज क्या है? एक्चुअल चैलेंज हो सकता है कि मेरा कंसर्न है कि मेरा दोस्त जो बहुत स्मोक करता है उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. प्रॉब्लम ये नहीं है मेरा दोस्त स्मोक करता है रेगुलरली, है ना. प्रॉब्लम ये है कि उसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, कि हो सकता है मैं पैसिवली स्मोक कर रही हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम है. तो अच्छा देन आई विल चूज कि जब भी वो स्मोक करे मुझसे थोड़ा दूर चली जाऊं. या फिर मेरा जेन्युइन कंसर्न है उसकी हेल्थ को लेकर, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि ओके आई एम कंसर्न्ड अबाउट माय फ्रेंड एंड दैट वरीज मी, सो आई नीड टू फर्स्ट लाइक रिलैक्स माई सेल्फ अ लिटिल बिट एंड देन थिंक ऑफ सम सॉल्यूशंस टू हेल्प हिम इंस्टेड ऑफ सुनाउइंग हिम और समथिंग, राइट? तो इसलिए तो ये समझोगे जब आप एग्जैक्टली बैरियर आ क्या रहा है, दिक्कत आ क्या रही है, तो आप उस चीज को फिर सोल्यूशन ढूंढ पाओगे, बजाय कि ब्रॉड ब्रश लेवल पे कुछ ढूंढने की बजाय, है ना. तो अभी ये बहुत पावरफुल टूल है, इसको आप रखेंगे अपने साथ. 2 homeworks before you go. I will stay back to take some question and answers for people who want. एक तो आप happiness test लेंगे. Yamini will share the link with you. Second, if you want, you can try the problem solving exercise again tomorrow before coming to class for some other thing, right? इन द सेम फॉर्मेट, कोई और चैलेंज है, ताकि आपको समझ में आए अच्छा कैसे वर्क थ्रू करना है राइटिंग के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को. या फिर आप ये एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हैं, डिफाइनिंग सक्सेस फॉर योरसेल्फ. आवर लाइफ सो मच रिवॉल्व्स अराउंड सक्सेसफुल होना है. हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, पर हमें मतलब ही नहीं पता है हमारे लिए सक्सेस का, और ये काफी सब्जेक्टिव टर्म हो सकती है. तो आप अपने आप से पूछेंगे कि ग्रोइंग अप, बचपन से जब आप बड़े हो रहे थे, सोसाइटी ने आपको क्या सिखाया, सक्सेस क्या होता है, उस बारे में लिखेंगे. आई वांट यू टू रिफ्लेक्ट एंड राइट अबाउट व्हाट सोसाइटी मेड यू बिलीव सक्सेस इज. पार्ट 1. पार्ट 2 यू विल राइट टुडे व्हाट डू यू डू दैट मेक्स यू फील सक्सेसफुल. आज आप क्या करते हैं एक रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपको एक्चुअली सक्सेसफुल फील कराती है, कामयाब फील कराती है. छोटी छोटी चीजें हो सकती है, अपना कमरा साफ कर लेना आपको हो सकता है सक्सेसफुल फील करवाता हो. योगा क्लास अटेंड करना हफ्ते में 4 दिन सक्सेसफुल फील करा सकता है. छोटी बड़ी जो भी चीज है, आप कमाते हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ये आपको सक्सेसफुल फील करा सकता है. तो आप लिखेंगे आपको सक्सेसफुल क्या फील कराता है. एंड फाइनली आप रिव्यू कर सकते हैं इफ यू वांट, व्हाट इज दिस शिफ्ट, पहले आपको क्या लगता था और अभी आपको क्या लगता है सक्सेस आपके लिए क्या है, और ये माइंडसेट में जो ग्रोथ आया है कैसे आया है ये ग्रोथ. तो ये एक छोटी सी सेल्फ अवेयरनेस बिल्डिंग एक्सरसाइज है जो हमें थोड़ा सा एक
अपने आप के लिए सेल्फ अवेयर बनाएगी कि अरे मैं रोज सुबह उठता हूँ या उठती हूँ और अपना एक जीवन एक तरह से एक लय में जीती हूँ, इसीलिए जीना चाह रहे हैं ना वो, कि हमें लगता है हम इससे सक्सेसफुल बनेंगे, तो एक बार असेस कर लेते हैं अरे सक्सेस है क्या। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वापस से अटेम्प्ट कर सकते हो। एक्सरसाइज आपके पास लिंक रहेगा कल क्लास तक 24 घंटे के लिए, सो दीज शीट्स आर अवेलेबल टू यू। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे थे पर्टिकुलर क्वेश्चंस के साथ, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, you can connect with me on Instagram on this handle Mindful Journaling Academy, DM में डाल सकते हैं, I would really try to help। अगर कुछ भी होगा मैं ऑडियो नोट्स भेज दूंगी, कोई पर्टिकुलर आपका प्रॉब्लम है तो आप ऑडियो भेज सकते हैं। कई बार बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं तो एकदम टाइमली रिप्लाई ना हो तो आप डोंट वरी अबाउट इट, आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू। या that's all from my side for today's class. If you want to leave, go ahead for your dinner, you can do that. But if you want to stay back and if you have any questions, then we can take those questions, Yamini, for a couple of minutes. Akanksha, can you put the home task slide again? I'll request them to take a screenshot. Sure. Please take a screenshot, Deepti ji, and also we had a couple of queries on YouTube. आप लोग इसका screenshot ले लीजिए. We will send you the link for happiness test on your WhatsApp group. All right, we can take questions now. Yeah, you'd like to lead the questions, Yamini? Yes, let me go through them quickly. Sorry, I was... No problem. YouTube पे भी you're seeing, na? That's why I'm asking. Yeah. One question was, how will we differentiate diary writing and journaling? हाँ, जर्नलिंग वैसे तो इतना कोई साइंटिफिक डिफरेंस होता नहीं है, क्वाइट ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट व्हाट यू कैन थिंक अबाउट दिस इज दैट डायरी राइटिंग कैन बी, कुछ आप नोट्स कर रहे हैं, जी मैंने आज ये किया वो किया, जस्ट लाइक कीपिंग अ लॉग ऑफ थिंग्स, दैट्स टिपिकली व्हाट पीपल कॉल डायरी राइटिंग। आपने डेट डाली एंड यू रोट दैट दिस इज हाउ माई डे, में ये हुआ ये हुआ ये हुआ, बुलेट पॉइंट्स में इवेंट, राइट, दैट्स मोर लाइक अ लॉग। Journaling is where you open up, it's a conversation with yourself. आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं। I think people still have doubts in the second and third point of the problem solving task that we did today. So if you could just briefly differentiate between the 2 points as well. Okay. First step, like I said, problem के बारे में express करेंगे आपके thoughts and feelings. सेकेंड स्टेप में समझेंगे कि ये जो मैंने कहानी लिखी, जो खिचड़ी दिमाग की हमने पेपर पर डाली है, इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से मैं ये सॉल्व नहीं कर पा रही। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, हो सकता है मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरा दोस्त बहुत स्मोक करता है, या ये मेरे घर पे ये पर्सन है इस तरह से बिहेव करते हैं, या फिर मेरे करियर में मैं बढ़ नहीं पा रही हूँ, तो ये मुझे जॉब नहीं मिल रही है, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो आपको मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड फील होता है, या मुझे इंसान पे बहुत गुस्सा आता है, ये सब आप स्टेप 1 में लिखेंगे। स्टेप 2 में आप लिखेंगे एक्चुअली दिक्कत क्या है भाई। तो आप probably you can come up with certain things like, whenever we get into a conversation, I feel that I am not being heard. That's what makes me angry. Or whenever I'm talking about this particular topic, this person tries to run away from the conversation. So I feel कि हम इस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है। आप एक स्टेप डीपर जाओगे, ऊपर नहीं रहोगे कि अरे ये प्रॉब्लम है या मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो जॉब क्यों नहीं मिल रही है भाई, मतलब, तो आप एक डीपर जाओगे कि आई एम नॉट फाइंडिंग टाइम टू, आई हैव नॉट सेंट आउट इनफ एप्लीकेशंस। तो जब आप एक लेवल डीपर जाके एग्जैक्टली समझ पाओगे ना ये जो प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपको ये सब इमोशन फील हो रहे हैं, इसमें एक्चुअली चैलेंज क्या आ रहा है, दैट इज योर स्टेप 2। फिर स्टेप 3 में जी अच्छा ये पर्टिकुलर चैलेंज है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट कैन आई डू टू नाउ address this particular thing. Okay, I'm not sending enough applications, let me sit down and make a list of companies where I'll send in applications. I don't have to worry about getting a job yet, that's not the first step. First, at least let me make a list of companies I can apply to, or what websites I can create my profile through which these companies are finding their potential candidates. Or then the solution can be, okay, I'm going to sit down with this person and talk about it, क्योंकि हम बात नहीं करते, या फिर if this person I think is not listening, then can I get someone else in the loop who can help this person understand more calmly.
Or if your problem is your own emotions, then, can I do something else to, handle my emotions about a particular topic better? I had, somebody who I was facing a challenge of repetitively same kind of issues were coming up. And then after a lot of journaling, sometimes it's not going to happen like this. For some problems, it's possible that it can take you multiple journaling sessions to figure out and make peace with certain things. आप देखिए इतने सालों का यहाँ पे भरा पड़ा है, एकदम से नहीं आ जाएगा सोल्यूशन. ठीक है, तो मेरे भी कुछ ऐसे इश्यूज रहे हैं जिसमें इट टुक मी मंथ्स एंड मंथ्स. लाइक फॉर एग्जांपल, डोंट कोट मी एनीवेयर, आई हैड समबडी इन माय लाइफ, some friend, and I didn't know I always had certain issue with this person. On and on and on and on, कुछ ना मुझे लगता था कि हर 2-3 हफ्ते में ना मैं bothered feel कर रही उस इंसान की वजह से. You won't believe, मुझे 8 महीने लगे to really come in terms of who this person is. 8-9 महीने मुझे अच्छे से याद है कि मुझे लगा यार, मतलब सितंबर अक्टूबर आ गया, मैं लास्ट दिसंबर से जर्नल कर रही हूँ उस इंसान के बारे में. मैं रोज बैठ के उसके बारे में नहीं लिखती थी, पर हर महीने में 2-3 बार मुझे लगता था कहीं ना कहीं से घूम फिर के कोई बात आ जाती थी व्हेन आई एम राइटिंग समथिंग. एंड क्योंकि मैं लिखती रही, मैं फिगर आउट करती रही, मैंने कुछ चीजों के साथ अपना पीस बनाया, कुछ चीजों को एक्सेप्ट किया, तो फाइनली आई केम टू अ पॉइंट एंड आई सेड यार, दिस पर्सन इज लाइक दिस, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस पर्सन टू बी समवन ही और शी इज नॉट. And now I am just so much at peace, and now I have just made friends with that person who they are, not what I wanted them to be. Right. So take your time. ये आप टूल सीख रहे हो एकदम से थोड़ी, ये ऐसा नहीं है कि जैसे योगा में सिखाते हैं ना सौरभ, रोज आना है क्लास में, तो थोड़ा टाइम आप दो, उसको प्रैक्टिस बिल्ड करो, गिव योरसेल्फ टाइम. एक फ्रेंड बना लो जर्नल को, अच्छा यार चल रहा है ना, थोड़ा इसको खाली करते हैं. धीरे धीरे आप फिगर आउट करोगे कितना पावरफुल टूल है. मैंने अपने लाइफ के कितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस जर्नलिंग के थ्रू लिए हैं, मैंने अपनी कितनी प्रॉब्लम्स जर्नलिंग के थ्रू सॉल्व किए हैं. सो मच आई फील मेरे से तो हो ही नहीं पाती है बात कभी कभी जब ऐसा डिफिकल्ट वो होता है ना, बिकॉज आई डोंट लाइक टू पिक अप अ फाइट कि मैं लड़ूं बोलूं. सो आई फील लाइक ओके, लेट मी गो बैक क्वाइटली टू माय, एंड आई यूज्ड टू बी दैट पर्सन व्हेन आई वाज लाइक 18, 19, 10 years ago. But today I'm like, listen, people don't deserve my bullshit कि मैं उन पे जाके बोलूं या चिल्लाऊं या लड़ूं. कोई नहीं डिजर्व करता है. We need to be respectful for everyone. So let's figure out what's going on here on a piece of paper or digitally in your phone. And then, like a mature person, you calm down and you go and have a mature conversation. Right. So I know we have crossed the time. So what we can do is, Akanksha, if that's okay, we can connect at 8:15 tomorrow and give full 15 minutes before the session for your question answers जो रह गए हैं. And please lower your hands and type your queries. That way, we will address them. And if you can connect tomorrow 15 minutes early, and we'll take all your questions which are pending. A quick few announcements. जिनको माइंडफुलनेस क्विज जो हमने कल भेजा था उसका लिंक दोबारा चाहिए, प्लीज सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज टू आवर टीम एंड दे विल सेंड इट टू यू. जिनको माइंडफुलनेस क्विज चाहिए वो हमारी टीम को मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, तो हमारी टीम आपको वो उसका लिंक भेज देंगे और आप लोग वो अटेम्प्ट कर सकते हैं. हैप्पीनेस क्विज हम आज भेजेंगे, तो ये सेशन खत्म होने के बाद आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी में वो टेस्ट आ जाएगा. आप उसके अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्लीज अटेम्प्ट द टेस्ट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. द थर्ड थिंग इज वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग आवर ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन प्रोग्राम टुमारो. So there are 3 timings. If you have not received the link, please use that link and attempt, because we had a lot of people asking how to be emotionally strong, and I think it starts from there. So please try and experience and see if you feel any change. I think it'll be really helpful. 2 सेशन अटेंड करके देखिए क्या आपको अनुभव होता है, और उसके बाद हम लोग फिर से देख सकते हैं. और of course we learn how to use journaling as a tool to become emotionally strong, but breathing and meditation are also amazing techniques that you should experience. Yeah, I breathe and meditate every day. I'm a big cheerleader of journaling, पर मैं रोज प्राणायाम करती हूँ और रोज सुदर्शन क्रिया करती हूँ और ध्यान करती हूँ. So मैं भी करती हूँ, तो I am also another proponent of it.
Also, yes, we have our yoga classes every day. Please continue with your yoga, and we will send you the recording, which will be available for 24 hours. So watch this. जिनको जो screen चाहिए था, आप लोग वापस से recording में जाके उसका screenshot ले सकते हैं. Send a message to our WhatsApp team at 8600039726 per G, and you will get the link for the breathing and meditation session. We will try and limit the time tomorrow, and we'll come 15 minutes early so that all of us can get our questions answered. कल प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाइए, 15 मिनट पहले, जिनको कुछ सवाल के उत्तर चाहिए आकांक्षा से, and we can get there. Okay. Good night, everybody. Bye-bye.